जीपीएस में क्या क्या पढ़ा था. आई एम जस्ट कीपिंग शॉर्ट फॉर 2 minutes. थिंक अबाउट जीपीएस. क्या क्या पढ़ा था जीपीएस. Just try to remember the sequence of the topics as the topic was flowing. We started off. बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, but I want you to do it still. How we go step by step. The basic principle, the segments, the codes, the frequencies, etc., etc. Just try to go think about it. सर एक चीज पूछनी थी सर. जरूर पूछिए. सर ये जो ट्रू रेंज का जो ट्रायंगल के बारे में नहीं. नो सर. हाँ बोलो. सर ये जो ट्रू रेंज का फॉर्मूला था जिसमें R1 इक्वल्स टू PR1 माइनस C इंटू डेल्टा टी था. हाँ. तो इसमें PR1 स्यूडो रेंज था. तो सर स्यूडो रेंज भी तो C इंटू डेल्टा टी था. तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा. Okay, write down on your paper. Write down pseudo range is equal to C into within bracket T plus delta T. लिख दिया. यस सर. Okay. Now next line is equal to, उसको और थोड़ा सा ये करते हैं, is equal to pseudo range is equal to C into T plus C into delta T. लिख दिया. यस सर. Pseudo range में क्या क्या components हैं? Pseudo range is equal to what and what? C into T plus C into delta T. यस सर. C into T क्या है? एक्चुअल रेंज. अगर Yes. दोनों की घड़ी बराबर होती है तो T निकलता. यस सर. और डेल्टा T क्या है? एरर है. यस सर. दैट मीन्स नीचे एक और लाइन लिखिए, इज इक्वल टू ट्रू रेंज प्लस C into डेल्टा T. C into T is the true range. सर ट्रू रेंज प्लस डेल्टा टी. True range plus C into delta T. C into delta T तो रह गया ना कंपोनेंट. C into T is equal to true range. And C into delta T is the error. बोर्ड पे बताऊं? हाँ सर बोर्ड पे बता. हाँ सर बता दो. क्योंकि मैं फ्राइडे को आया नहीं था और जो रिकॉर्डिंग थी उसमें वो हैंग हुआ था आपकी स्क्रीन, तो बोर्ड नहीं दिख रहा था उसमें. अच्छा ओके चलो तो बोर्ड पे बताते हैं. ओके लेट मी सेट अप द कैमरा. जस्ट 1 सेकंड. बोर्ड दिख रहा है? यस सर. यस सर. All right. So this is the receiver somewhere on the earth.
Here is the satellite. Satellite sending signal. The CA code transmitted at T1. At the same very time T1, the code is also generated here in the receiver at T1. ठीक है, दोनों में एक साथ हुआ. यहां से तो वो चल पड़ी, ट्रांसमिशन हुआ है, यहाँ पे सिर्फ टाइम कीपिंग के लिए अपने आप में जनरेट किया. So when it started, is it now known to the receiver because they are synchronized? Yes. Yes, sir. So T1 is now known. Now the same code is reaching to the satellite after some time. यहाँ से उड़ता हुआ पहुंचेगा, ट्रैवल करता हुआ 20,200 किलोमीटर जो कि ऊपर में है, यहाँ से वहां से चलता हुआ आएगा तो थोड़े देर में पहुंचेगा. So the same code when it is received through the antenna, then this reception time, new time has been, थोड़ा टाइम पास हो गया. टाइम T2 पे ये मान लीजिए 10 बजे था तो 10:01 पे आया, फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. So this T2 is because of error. T2 Yes, sir. नहीं. आप दिवाली पे देखते हो, पटाखे छूटते हुए देखते हो ना, रॉकेट गई आसमान में, आपको फ्लैश दिखता है, थोड़ी देर बाद आपको आवाज सुनाई पड़ती है कि नहीं? Yes. तो आवाज तो निकली थी उस लाइट के साथ, क्योंकि दोनों एक साथ हुआ था. करेक्ट. तो जब बम फूटा था, आसमान में रॉकेट छूटा था, तो लाइट बीइंग वेरी फास्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आप समझ लो कि जैसे ही आपने लाइट देखा वो टाइम T1 था, वहां से उस समय साउंड चली है. करेक्ट. Yes. लाइट भी चली, साउंड भी चली. लाइट पहुंच गई आपके पास तुरंत, मान लो 0 टाइम पे पहुंच गया, इमीडिएटली आपने देख लिया, तो उसी टाइम T1 पे लाइट भी चली, टाइम T1 पे साउंड भी चली. Yes, करेक्ट. लेकिन वो साउंड आपके पास थोड़ी देर बाद पहुंचता है. ऑब्जर्व किया आपने? Yes, sir. Yes. कितने देर बाद पहुंचती है आपके पास? कितने देर बाद पहुंचती है? यहाँ पे बम फूटा तो तुरंत, वहां पे फूटा तो थोड़े टाइम पे, और दूर में हुआ तो थोड़े और देर में. जितना दूर उतना टाइम. करेक्ट. Yes. दैट मीन्स जब वो आवाज पहुंची है तब टाइम T2 हो गया ना भाई. T1 पे चला था, वहां से जब आया तो T2 हो गया ना, टाइम डिफरेंस हो गया ना. Yes. टाइम T1 पे चली थी, वहां से T2 पे रिसीव हुआ, इतने देर रास्ते में था ना. Yes, sir. अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? Yes. जोर से But बोलो. सर इसमें सर जैसे इसमें तो हम लोग दो चीजें कंसिडर कर रहे हैं, साउंड एंड लाइट, तो ठीक है कर दिया. बट इसमें जैसे वेव ट्रांसमिट होगी T1 So T1 is now happening because the receiver is able to generate the code at the same time. T1 पे T1 T2 T1 T2 ये कोड जनरेट हुई रिसीवर में. मैंने टिक किया, मतलब टिक पे वहां से चली है, टिक टॉक टिक टॉक, तो टिक पे चली है, टॉक पे रिसीव हुई. ये रिसीवर खुद जनरेट कर रहा है कोड, यही वाला कोड खुद ही जनरेट कर रहा है. ये यहाँ से टिक चली है, यहाँ पे जनरेट होता है टिक टॉक, टॉक पे रिसीव हो रहा है, टिक पे चली है. करेक्ट. सर T1 पे चली है और T2 पे रिसीव हुआ है. हाँ, तो टाइम, तो डिफरेंस ऑफ टाइम T2 माइनस T1 हुआ है या नहीं? Yes, sir. दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू. 10 बजे चली, 11 बजे पहुंची, तो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस हुआ या नहीं? Yes, sir. 10 o'clock चली, यहाँ 10.01 सेकंड पे यहाँ पहुंची, तो 0.01 सेकंड का टाइम डिफरेंस हुआ या नहीं?
बट सर ये एरर को कंसिडर करके ना, क्योंकि एरर ना हो तो अभी एक ही नहीं। टाइम पे पहुंचना चाहिए। अभी नहीं, अभी एरर को कंसीडर नहीं किया। अगर ये दोनों क्लॉक सही होते तो ये होता, लेकिन दोनों क्लॉक के बीच में एक डेल्टा टी का एरर है। मान लो यहाँ पे 10 o'clock है, अगर मान लो यहाँ पे 10 o'clock है इन वेरी प्रिसाइज मैनर, वो बहुत ऑर्डिनरी होता है। यहाँ पे मान लो टाइम इज दिस मच, इतना का फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे चला और यहाँ पे जो रिसीव हुआ इसमें इतने देर का एरर हो गया, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में 0.000001 सेकंड का फर्क है। तो दिस वन इज डेल्टा टी। तो जो हम ये रिसीव करते हैं, जो टाइम निकलता है, वो एक्चुअली हमारा क्या निकलता है, टी प्लस डेल्टा टी। दिस इज द टोटल टाइम डिफरेंस दैट वी आर फाइंडिंग, जिसमें ये तो एक्चुअल टाइम है और ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। मान लो एग्जांपल समझो, मान लो मैं 9 बजे यहां से चला, 10 किलोमीटर के स्पीड पे चलता हूँ, 1 घंटे में कितनी दूर जाऊंगा? यस सफरान। सर प्लीज रिपीट सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके विपिन, क्लोज योर माइक्रोफोन। Vipin, close your microphone. All right. I start from here at 9 o'clock. By my watch, I start from here at 9 o'clock. I move at, let us say, 50 kilometers an hour. Constant speed, no change. 1 घंटे में कितने बजे पहुंचूंगा? कितने दूर पहुंचूंगा? 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। ठीक है। आपके हाथ में घड़ी है। जब मैं यहां से चला था, तो आपका घड़ी कुछ और बता रहा था। ठीक है ना? आपका घड़ी और मेरे घड़ी में फर्क था। तो एक्चुअली जब आप 9 बज रहा था, तब मैं एक्चुअली 8:30 बजे यहां से चल चुका, या कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का डिफरेंस। या ऐसे कहो कि जब मैं 9 बजे चल रहा था, तो आपकी घड़ी मान लो 8:30 बजा रही थी। आधे घंटे का डिफरेंस है दोनों क्लॉक में। यस। तो मैं जब 1 घंटे में वहां पहुंचा, 9 बजे से यहां चला हूं, उस समय 8:30 बज रहा था। जब वहां पे पहुंचूंगा तो 9 बजे या 9:30 बजे का टाइम हुआ होगा उनका, आपकी घड़ी में। यस सर। आधे घंटे का Yes, डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं मेजरमेंट में? यस सर। तो वो दिस इज मेजरमेंट डेल्टा टी सर। कहा जाता है विच इज डेल्टा टी है। ओके सर, नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर, समझ गया सर। So this is the time difference of actual difference between the, I mean, time travel. But this delta t is the difference between the two clock. तो जो हम ये निकालते हैं वो हमेशा ये निकलता है, this multiplied by c Yes. is the pseudo range, क्योंकि इसमें ये वाला एरर इंक्लूडेड है। Distance is equal to speed into time, correct? Yes. सही है ना? Now we saw pseudo range 1, for example, satellite 1 का is equal to c into t plus delta t. Is that correct? अभी देख लिया हमने। Yes. This is equal to c into p plus c into delta t. Is that correct? Yes sir. This is the true range plus this is the range error. Is that correct? क्योंकि ये टाइम का एरर था तो इतना डिफरेंस हो जाएगा रेंज का।
Yes, sir. So PR is equal to TR plus error. So is this true range is equal to PR minus range error? Is it okay? Yes, That means this is equal to PR minus C into delta T. Is this okay? Because this is same. yes, And this is given by a formula x1 minus x whole square plus y1 minus y whole square plus z1 minus z whole square. So this true range is in fact calculated by this, in which we are removing the element of error. True range is equal to pseudo range minus error is equal to so and so. So this is equal to true range. yes, Understood? yes. एंड सर बढ़िया। ये जो एरर रहेगा वो मतलब किसमें और एटॉमिक क्लॉक में तो नहीं रहेगा, तो जीपीएस रिसीवर के क्लॉक में ही रहेगा? मोस्टली यस। एटॉमिक क्लॉक तो परफेक्ट है मान लो, हालांकि उसमें भी एरर होती है, उसको भी अपडेट किया जाता है, एमसीएस उसको भी अपडेट करता रहता है, उसकी भी मॉनिटरिंग करता है, बट वहां से जो करेक्शन हमारे क्लॉक में आती है, तो हमारे क्लॉक में कुछ लिमिटेशन के चलते वो पूरा अपडेट नहीं हो पाता, इसलिए सैटेलाइट क्लॉक और यूजर क्लॉक इनके बीच में डिफरेंस रह जाता है। हो सकता है कि सैटेलाइट क्लॉक में भी जीपीएस यूटीसी टाइम के साथ डिफरेंस हो, तो एक सैटेलाइट क्लॉक का एरर अलग होता है और सैटेलाइट क्लॉक के साथ जीपीएस रिसीवर का एरर एक अलग होता है, मतलब दोनों में ही गड़बड़ हो सकती है। बट यहाँ पे जो हम लोग मेनली बात कर रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट क्लॉक एंड द यूजर क्लॉक। यस, लाउड एंड क्लियर, ऑल अंडरस्टूड? यस सर। So this we were talking about satellite number 1. So this range of satellite number 1, which we have derived from pseudo range of satellite number 1. ऐसे ही और सारे सैटेलाइट से सबका इक्वेशन बनता है, जिसमें एलिमेंट ऑफ एरर इज रिमूव्ड मैथमेटिकली बाय दिस फॉर्मूला। ट्रू रेंज वी आर गेटिंग विद दिस फॉर्मूला, तो उसमें x2, y2, z2, तीसरे सैटेलाइट के लिए x3, y3, z3, चौथे सैटेलाइट के लिए x4, y4, z4, ऐसे 4 इक्वेशन बनते हैं, कम से कम 4, मैक्सिमम कैन बी मोर आल्सो, minimum of 4 equations to get the ranges like this we had seen, जिसमें हमें point of intersection मिलेगा, जिस point of intersection का coordinates होगा x, y, z, which is this one x, y this one and z this one. इसका सेंटर x1, y1, z1, इसका सेंटर x2, y2, z2, इसका सेंटर x3, y3, z3, और इन सब को जब हम इस फॉर्मूला में डालते हैं तो हमें ये x, y, z निकल आता है। अंडरस्टूड? बुझे? बुझे कि नहीं? यस, यस सर। एनी डाउट स्टिल? So now that we did talk about it, take out the notes that I have sent to you and read once again read that question where we are talking about what is pseudo range and how pseudo range is corrected and correct position is obtained by the GPS receiver. Read that question once again. Please, honestly, everyone, open that book, open that page, find out that question and go through the question. मैं किसी को भी बोल दूंगा पढ़ने के लिए।
Just 1 second, please. Please find out. Did you find out? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sahil, read the question. Sahil. Or, okay, Sahil, no. Atma. Yes, sir. Okay, please read the question and read the answer slowly so that everybody can listen and follow what you are saying. What is pseudo range? How, despite error in range, the GPS observer obtains accurate position fix? Observer, nahi, receiver. Is it observer written? Sir, GPS receiver obtains accurate position fix. हाँ, तो रिसीवर की जगह ऑब्जर्वर आपने कहा था, इसलिए मैंने करेक्ट किया. Okay, sir. हाँ. Pseudo range. In order to obtain range of satellites with accuracy, the exact position of the satellites has to be known to the GPS receiver and also the clocks of the satellite, and the receiver has to be perfectly synchronized. Now stop. Everybody think about it. Everybody think about it. What it saying? जीपीएस रिसीवर को सैटेलाइट का लोकेशन पता होना चाहिए और दोनों के क्लॉक्स सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए. यही कह रहा है ना पहले लाइन में? यही कह रहा है दोनों 2 lines? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody understood? जीपीएस रिसीवर को, जो मेरे पास रिसीवर है मेरे मोबाइल में, मेरे जहाज पे, जो मेरे चार्ट टेबल पे लगा हुआ है, उसको 2 चीजें चाहिए. एक, जीपीएस सैटेलाइट का लोकेशन वो कहाँ है, और दूसरा, दोनों का घड़ी एक ही होना चाहिए, उससे हम रेंज निकालेंगे. एक्चुअली हमें चाहिए था 2 चीज, पोजीशन, रेंज. रेंज निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? C इंटू टी करते हैं, स्पीड इज इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. उसके लिए घड़ी मैच होनी चाहिए. यूजर क्लॉक एंड सैटेलाइट क्लॉक मस्ट बी मैचिंग टुगेदर. गो अहेड, नेक्स्ट लाइन. Both of these are obtained from the navigation message transmitted by the satellites. Stop. Vipin, explain this. What is the meaning of this line? Vipin, Yes, sir. please explain what he said, this line. माइक्रोफोन ऑन कीजिए. हाँ. One second, sir. क्या हुआ? I did not get you, please. Sir, he's saying that if the speed of light is increasing, the range will be increased. And if the speed of light is decreased, then the range will be decreased. I am afraid not. Not this what he is saying. Okay, you read the question, answer that part where we are talking about. Both of these are obtained by the receiver from the navigation message. Please read that line. So both of these
are obtained from the navigational message transmitted by the satellite. The range of the satellite is calculated by the formula, and the formula is उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पहले लाइन की बात बोल रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन. Both of Yes, these are obtained from the navigation message. Is that clear or not? sir. Remember what is navigation message? The frame of 30 seconds, 5 subframes, ephemeris data in that, almanac data in that, and clock corrections there. Remember? Yes, sir. So clock correction से yes, clock synchronize होगा या नहीं? Yes, sir. ephemeris से उसका लोकेशन पता चल गया या नहीं? almanac plus ephemeris से लोकेशन सैटेलाइट का पता चल गया या नहीं? Yes, sir. Clear? Atma? Yes. Yes, sir. ओके, सो नेविगेशन मैसेज जो वहां से ट्रांसमिट हो रही है L1 L2 पे, उससे मुझको उसका लोकेशन एफएमआरएस अल्मैनक से मिल गया. फर्स्ट सफरे में जो क्लॉक करेक्शन था वो उससे मेरे क्लॉक सिंक्रोनाइज हो गए दोनों. Yes, sir. सो प्लीज गो अहेड. The range of the satellite is calculated by the formula range equals speed of light into time the signal takes to travel from satellite to the receiver. However, due to limitation, sir, can I continue? Yes, have you understood the meaning of this line? Yes, sir. Range is calculated C into T. C into T, sir. Okay, now the problem with that. अब प्रॉब्लम however के बाद हम प्रॉब्लम ऑब्टेन कर रहे हैं इसमें कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों एरर होता है और क्या प्रॉब्लम होती है. प्लीज गो अहेड. Due to limitations in method of clock update known as clock bias error, some error remains in the synchronization of the two clocks. Okay, now think about this line. What it is saying? Due to limitations of the clock update method, जिससे अपडेट होती है, कुछ तो करते होंगे कि क्लॉक अपडेट हो रहा है, कुछ तो सिग्नल आता होगा जिससे मैं अपने घड़ी को ठीक करूं, लेकिन उस प्रोसेस में कहीं कुछ कमी रह जाती है और 100% मैचिंग नहीं होता. सैटेलाइट क्लॉक यूजर क्लॉक के बीच में डिफरेंस रह जाता है. रीड दैट लाइन वंस अगेन. Due to limitations in method of clock update known as the clock bias error, some error remains in the synchronization of the two clocks. Okay, you are not reading it for the class, you are trying to read it for yourself, for your understanding. Now read it once again and try to understand what you are reading. You are not telling me or the class. Read it for yourself. Everybody, read it for yourself. Anybody wanting to ask question, please ask. नहीं समझ में आया तो विनीत. Sir, what is the limitation of clock update? Limitation of clock update is called clock bias error. We are calling it by name clock bias error. This is a technical subject. What method is used? क्योंकि वहां पे टाइम है, यहाँ पे एक घड़ी है, इस घड़ी को, ये क्रिस्टल क्लॉक है, नॉर्मल क्रिस्टल क्लॉक है जैसा क्वार्ट्ज क्लॉक होता है, उसको अपडेट करेंगे. कैसे करेंगे? रेडियो वेव से. कुछ तो मेथड यूज होता होगा, कुछ सिग्नल आती होगी, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता होगा, वो हम घड़ी को देते होंगे, घड़ी वापस अपना थोड़ा सा ठीक करता होगा, एडजस्ट करता होगा. So we are not going into the phase difference, phase angle, updates and this and that. हम पूरे टेक्निकल बातें नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो भी वो तरीका है उसमें कुछ एरर रह जाती है और उसको हम बोलते हैं क्लॉक बायस एरर. Means, sir, it is not able to completely update the clock. It is not able to completely update the clock. उसमें तो लिखा हुआ है
it is not able to synchronize 100% with the satellite clock. Understood? Okay. तो Yes, sir. अपडेट किया तो 10 बज गया, लेकिन 10 बज के 0.001 सेकंड रह गया, वो 0.00001 सेकंड का एरर रह जाता है। Understood? Please, Atma, go ahead. Yes, sir. As a result, the range of satellite calculated by the GPS receiver has an element of error due to the clock's difference. This calculated range, which includes error due to difference in time between satellite clock and user clock, is called pseudo range and is given by Go ahead. And it's given by and pseudo range is equals C into T plus C into delta T, where delta T is the difference between the two clocks. बोर्ड पे लिखा था यही हमने। Yes, sir. Error, sir. Yes, sir. pseudo range is equal to C into T plus C into delta T. C into delta T क्या है? एरर Sir. ड्यू टू टाइम डिफरेंस है या नहीं? डेल्टा टी के डिफरेंस चलते हैं। Yes, sir. तो अगर एरर हटा देंगे तो ये हमारा ट्रू रेंज बच गया ना, ट्रू रेंज प्लस एरर। एरर हटा देंगे तो ट्रू रेंज बचेगा ना। Yes, sir. So Yes. pseudo range is equal to true range plus error. So pseudo range में से एरर निकाल देंगे तो ट्रू रेंज। pseudo Yes. range में ट्रू रेंज प्लस एरर, तो ट्रू रेंज इज इक्वल टू pseudo range माइनस एरर, यही होगा ना। Yes, sir. So that is what we have seen. And Yes, how is it done? Mathematically by the GPS receiver, GPS receiver. by applying a formula, under root वाला formula, that is trilateration. Trilateral matter. Saffron? No, sir, it is called trilateral method. Exactly. So everybody clear? अभी भी Yes, sir. डाउट है कुछ? नहीं सर, क्लियर है। चलो, okay. So Atma, are we done with the question or it is continuing? Sir, formula है sir उसका. Okay. उसके आगे कुछ फॉर्मूला के बाद भी लिखा है? नहीं सर. Similarly, sir, चारों सैटेलाइट्स का दिया हुआ है एंड 4 GPS रिसीवर कंप्यूट करके निकालता है एंड यूजिंग द करेक्टेड रेंजेस ऑफ सैटेलाइट्स the GPS receiver uses the trilateration method to obtain true position despite error in range due to clock error. बस आंसर हो गया। अब एक चीज खाली पिक्चर बनाने के लिए, अब इसका कोई रेलेवेंस एग्जाम से नहीं है, बट रेंज एरर होगी तो क्या होगा, क्यों एरर होएगा, लेट अस सी इट ऑन द बोर्ड। जस्ट 1 सेकंड, Okay, sir. जस्ट 1 सेकंड। You got this XYZ, X1, Y1, Z1 of the satellite, and you have got a correct range, एकदम correct true range मिला है। So will this be the circle, position circle? Will this be the position circle? यस सर। If you have got another satellite, इसका X2, Y2, Z2 अगर मिल गया है correct, and इसका भी correct range अगर मिल गया, हमें correct range मिल गया, तो इसका भी position circle होगा या नहीं होगा? यस सर। But suppose if there was pseudo range, थोड़ी सी error हो गई, तो हमें ये range मिलेगा कि नहीं, point of intersection यहाँ पे मिलेगा या नहीं? हाँ सर। तो जो यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए था वो यहाँ दिखाएगा या नहीं? यस सर। इसको भी अगर एरर हो गया, इसमें भी एरर हो गया, तो इसकी एरर मान लो यहाँ पे, तो ये रेंज का सर सर्किल एक बार और बता दिए हो सर। जाएगी क्या? सर फिर से एक बार बता दिए, थोड़ा वो हो गया था नेटवर्क इशू।
We know trilateration में there is station 1, station 2, station 3. I need to have position circle. I need to have position circle. I need to have position circle. Correct? Yes, sir. And this is the position of the GPS. This is the GPS receiver position. Yes, Correct? इसमें मुझको इनपुट क्या चाहिए था? X1, Y1, Z1. सैटेलाइट का पोजीशन, सैटेलाइट का पोजीशन X2, Y2, Z2. सैटेलाइट का पोजीशन X3, Y3, Z3. तीनों का पोजीशन चाहिए था और तीनों की रेंज चाहिए थी. R1, R2 एंड R3. इससे हमें ये मिला, इससे ये मिला और ये मिला. So this is the position, right? yes, sir. But if there was error in the range, तो ये position circle ऐसे बनती या नहीं? अगर Yes. रेंज एरर होती तो ये पोजीशन सर्किल कुछ ऐसा बनता या नहीं? Yes, sir. इसका रेंज एरर होता तो इसका पोजीशन सर्किल ऐसा बनता है. So this range is known as what? Pseudo range, sir. Very good. और उसमें से एरर माइनस कर देंगे तो क्या बचा? True range. True range. Is it clear now? This Yes, one sir. is error, which is C into T, delta T. This range is the true range, which is C into T. So pseudo range is equal to true range plus error. तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ट्रू रेंज बचेगा या नहीं? So true range is equal to PR minus C into delta T. ये हुआ या नहीं? सर मतलब ये भी अपना जैसे जेनस कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने जो ट्रिम का अपन ने कैलकुलेशन लगाया था बाय कॉस अल्फा, वैसे ही इसमें ये भी चीज मैथमेटिकली हो रही है जो जीपीएस कर रहा है. Mathematically, yes. The word mathematics is common. Word mathematics is common, but वहां टोटली दूसरा प्रोसेस था. वहां एंगल चेंज हो रहा था, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है. तो मैथमेटिक्स तो है, कैलकुलेशन वहां भी थी, यहाँ भी. अब ऐसा है ना कि कैलकुलेशन मुझको करनी हो, कैलकुलेशन करना है मुझको, तो दो तरीके का कैलकुलेशन होगा ना. मैं ये देखूं कि मुझको हरिद्वार जाना है, मेरे पास ये गाड़ी है, ऐसा ट्रैफिक है, तो कितना टाइम लगेगा. एक तो कैलकुलेशन ये हो गया. दूसरा ये कि एक पार्टी मैं कर रहा हूँ, 10 लोग आने वाले, तो कितना चावल लगेगा. दोनों तो कैलकुलेशन है ना भाई. Yes, sir. लेकिन कैलकुलेशन चीज अलग अलग की हो रही है ना. क्या कहते हो? सो जेनस कॉन्फ़िगरेशन हरिद्वार का ट्रिप है, और ये कैलकुलेशन बेसिकली 10 लोगों का चावल खरीदने का कैलकुलेशन है कि इतना खाते हैं तो इतना लगता है. अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है ना. सो कैलकुलेशन दोनों है, बट दोनों एंटायरली अलग अलग चीज कैलकुलेट करते नहीं सर वो तो आ गया समझ में, लेकिन बट ऐसे कोरिलेट करने के लिए चीजें होती है तो इजीली आ जाती है बात में, दिमाग में चीजें. हैं. हाँ, बात सही है. देखो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. वहां की चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी हमेशा. एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. आज यहाँ पढ़ रहे हो, वो कुछ वहां कहीं कहीं जाकर के और रिलेट हो जाएगा. आपकी आज की इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कहीं और काम आ जाएगी. होता है, 100% होता है. ऑलराइट, सो are we done with
the pseudo range and corrections and all that. Did we also do the world geodetic system? Did we complete it or not? सर 3-4 स्लाइड्स के लिए क्या हुआ? World geodetic system, did we finish or not? Finish, sir. Okay. Any questions in that? Zyada kuch nahi hai. What is world geodetic system? It is the model of the earth represented by numbers which are representing certain imaginary lines called latitude and longitude. These numbers should pinpoint an exact physical location on the surface of the earth. This model must match with the real life measurements. Every country has, not every country, but many countries have their own model of the earth and what we call as geodetic system. The one which is most popular is something called WGS, World Geodetic System. Last सर हर amendment कंट्री of का रेफरेंस पॉइंट अलग होगा ना, जैसे यूके का प्राइम मेरिडियन है तो दूसरी कंट्री का दूसरा रहेगा. एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है. बट मैं अपना यहाँ खड़ा हूं तो मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलता हूँ. What am I using? I am using Greenwich Mean Time. I mean, sorry, not Mean Time, but Greenwich Meridian and Equator. And Yes. what I am following? I am following WGS 84. लेकिन मैं एक दूसरा चार्ट निकालूं जो कि इंडियन चार्ट है, इंडियन रेफरेंस पे है, तो यहाँ मेरे पोजीशन का जो लैट लॉन्ग होगा वो WGS 84 वाला नहीं होगा. यहाँ इसी पोजीशन का लैट लॉन्ग कुछ और होगा क्योंकि हमारे रेफरेंसेस कहीं और है. मैं यहां से मेजर करता हूं कि यहां से सारे सिनेमा हॉल 2 किलोमीटर है. आप अपने यहां से बोलोगे तो बोलोगे ना 20 किलोमीटर है. यस सर. तो रेफरेंस जहां से लेंगे वहीं से मेजरमेंट होगी. सो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मेजरमेंट्स है. Why we are talking about WGS 84 or geodetic system? Because you are looking at a position in your GPS and it is showing lat long. So you should know what is the meaning of this latitude longitude. What does it mean? It is not a plain simple number you can always use. Without any concern you can use to plot position on any chart. No, you cannot do that. You should know that this number relates to a datum system or geodetic system, and this should match my chart and the GPS should match. If not, I cannot directly plot the position. मेरी पोजीशन गलत होएगी अगर मैं दोनों में अलग अलग डेटम यूज करूं. जीपीएस का कुछ और चार्ट का कुछ अलग अलग करूंगा तो पोजीशन गलत आएगी. Known as this difference between two physical points represented by the same latitude longitude is what? Datum shift. Datum shift. Very good. So are we good to start the new subtopic of the GPS? सर दिव्यांश, ऑलमोस्ट दिव्यांश, हो गया ऐसा टाइम. यस जी? सर. अच्छा 10-15 मिनट रह गया. चलो 10-15 मिनट में एक टॉपिक तो हो ही जाएगा. Next is speed determination. You were talking about Doppler law. Now here comes Doppler law. The GPS also uses Doppler shift effect to calculate position, or not for position, to calculate speed of the receiver. If this is the shape, there is this antenna
which is receiving signal from the satellite, if it is moving, that means there is a difference of distance between the satellite and the receiver or not? अगर ये चल रहा है तो इन Yes. दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं? Yes, sir. लेकिन सैटेलाइट तो खुद चल रहा है, यहाँ पे रिसीवर, सैटेलाइट तो खुद चल रहा है, तो एक रिलेटिव मोशन है कि नहीं दोनों के बीच में? रिलेटिव मोशन है कि नहीं रिसीवर और सैटेलाइट के Yes, बीच sir. में? सैटेलाइट वहां था, अब यहाँ हो गया, अब वहां हो गया, अब चला गया, तो रिलेटिव मोशन है कि नहीं रिसीवर और सैटेलाइट के बीच में? Yes. है सर. है. Now I said that satellite is here, ship is moving, or ship is here, satellite is moving, but most of the time what happens? Ship is moving. And satellite is also moving. Both are Yes. moving. Both are moving. That means either it will be like this or it will be like this. सैटेलाइट भी चल रहा है और जहाज भी चल रहा है धीरे धीरे, या तो एक डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में. सही? So on the surface of the earth there is a receiver. The satellite is moving in the sky in the orbit. The linear motion right now is something like 3.9 kilometer per second. Is that correct or not? Satellite speed in the orbit. Yes, sir. Is this the velocity v? The satellite is moving at the velocity v here in this direction. At the same time, this is transmitting some signal to the receiver, which is L1. L1 is 1575.42 megahertz. A wave of frequency ft is being transmitted or not? ft में डॉपलर लॉग से रेफरेंस लेके आ रहा हूं ताकि आप कोरिलेट कर सको. ft frequency being transmitted by the satellite to the receiver, yes or not? Yes, sir. The receiver has position x and y of this or lat long of this. इसका पोजीशन निकल गया, इसका पोजीशन निकल गया, तो ये ऑल्टीट्यूड निकल आएगा कि नहीं इसका, और रादर अल्फा और रादर अल्फा, इन दोनों का ये एंगल निकल आएगा कि नहीं? ऑल्टीट्यूड कितना है सैटेलाइट का? Yes, sir. दैट मीन्स अगर यहाँ से v के स्पीड पे चल रहा है तो यहाँ पे v cos अल्फा से रिलेटिव मोशन होगी या नहीं? Yes, sir. हाँ सर. अगर रिलेटिव मोशन होगा तो इसके चलते there will be a frequency received by this which is fr, different from this or not? ये ट्रांसमिट हो रही थी तो रिसीव होगा कुछ, रिलेटिव मोशन है तो this will receive something else or not? हाँ सर, कुछ और भी होगा. Yes, sir. तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई शिफ्ट नहीं है मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं, अगर इतना शिफ्ट है तो इतना रिलेटिव मोशन, अगर इतना शिफ्ट है तो इतना रिलेटिव मोशन, डायरेक्टली रिलेटेड है. हाँ सर. Observing this shift, we can find out what is the value of v, और we can find out v तो हमारे पास है ही बेसिकली, हमारे पास ये भी है, 3.9. ft भी है, ये भी है. तो what happens now, supposing that the receiver is stationary at this point, अगर stationary है तो ft being so much, v being so much, v cos alpha being so much, do we get an fr or not? कि इतना कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? अगर ft इतना है
v इतना है, v cos अल्फा इतना है, तो fr की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ये कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ft was 1575.42 and the calculated frequency is 1575.52. मान लीजिए कि आपने ये कैलकुलेट किया, fr should be 0.1 megahertz more because satellite is coming close to me, so it should be 52. But what is your observation? That fr is actually 1575.50. कैलकुलेट अगर सिर्फ ये चलता, ये स्टेशनरी था, तो इतना चाहिए था, आना चाहिए था। बट देयर इज डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। What is the reason? Why could there be a change, difference between the frequency calculated, frequency shift calculated based on these parameters? आपका डिफरेंस आ रहा है, क्यों? Is it not because the receiver is also moving away and so the relative motion is reduced because it was coming close और मैं इससे दूर भाग रहा हूं, तो रिलेटिव मोशन कम होगा या नहीं? हाँ सर। कम होगा तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कम हो जाएगी। अगर रिसीवर इधर को चल पड़ा तो ये इधर को आ रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो फिर रिलेटिव मोशन बढ़ेगा या नहीं? हाँ सर। That means this will go in that case 5/8 भी चला जा सकता है। जितना तेज चलेगा उतना ये डेविएशन होगा, इस कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी से डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। So this change can only be attributed to the receiver motion, either towards the satellite or away from the satellite. इसी डिफरेंस को पकड़ते हैं ये। GPS receiver is getting the difference from the actual calculated change. इतना calculated change होना चाहिए था, but इतना further change हो रहा है। This further change is because of the motion of the receiver, which is translated into the speed of the receiver. Just by seeing the difference of frequency, this is translated into receiver speed, at what speed this is moving. But am I coming close to you right now? Yes sir. Yes. Am I coming close to you right now? Yes sir, still coming. Yes. Sir. Am I coming close to you right now? हाँ सर। Yes. तो मैं इधर जाता हूं तो भी तुम्हारे तरफ जाता हूं, इधर जाता हूं तो भी तुम्हारे तरफ जा रहा हूं, इधर भी तुम्हारी तरफ, यहां से यहां तक मैं तुम्हारी तरफ जा रहा हूं, और यहां के बाद तुमसे दूर जा रहा हूं या नहीं? Yes sir. Yes. So 180 degrees from here to here, anywhere I go towards you. From here to here, 180 degrees, wherever I go away from you or not. So Yes, sir. ये जो स्पीड निकलती है, it is only a component. एक से टोटल स्पीड नहीं पता लगता है कि मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं। जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऐड किया था, जो डिफरेंस आया था, वो इस मोशन के लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है। So what is done? 3 satellites are taken. 3 of these such calculations are done, and all these 3 are resolved into XYZ components. 3 सैटेलाइट का ये वेक्टर निकालते हैं, कितना तेज चल रहा है, और उस वेक्टर को XYZ कोऑर्डिनेट्स में रिजॉल्व करते हैं, और उन तीनों XYZ के रिजल्टेंट को हम फाइनली एट्रीब्यूट करते हैं GPS रिसीवर के मोशन से।
ये सब तो समझने वाली बात हुई, लिखना है बस इतना ही। जो इतना लिखा हुआ है वो सारा एक्सप्लेनेशन ये है। जब आपको स्पीड पूछा जाए, हाउ इट कैलकुलेट द स्पीड, आपको ये ड्राइंग्स नहीं बनानी, ये वी कॉस अल्फा नहीं करना, ये डॉपलर लॉग नहीं बोलना, बट डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट जरूर बोलना है कि इट इज ऑल्सो यूजिंग डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड। ये जरूर बताना है आपको कि व्हेन द सैटेलाइट इज मूविंग इन द ऑर्बिट, it is also coming close to the satellite, or where from here to here getting away from, यहां से यहां तक ओवरहेड तक नजदीक आएगा और ओवरहेड के बाद दूर जाएगा। Having calculated the position, having known the position already fixed लग चुका, we can also calculate the declination of this satellite. We can get the angle which is resolved. The satellite motion is now resolved into two components, one towards the receiver or away from the receiver, other perpendicular to this which is not required, वो तो उधर को जा रहा है। So this one is taken from here, frequency shift is calculated, any deviation from this calculated frequency is because of motion of the receiver. So you can go through this particular question. You can read it in the answer. You can also read through the notes to find out how the speed is determined by the GPS receiver. So not only the speed, but also force is calculated. Speed, when we have X, Y, and Z components, three components. The ship is going like this. That means it's a helicopter moving in the sky. अगर रिजल्टेंट ऐसा आया तीनों कंपोनेंट का, अगर यूं आया मतलब वो अर्थ पे चल रहा है, डायरेक्शन अपवर्ड्स नहीं है या डाउनवर्ड्स नहीं है। सो वी कैन गेट द वेक्टर ऑफ द मोशन यूजिंग थ्री vectors, three motion vectors of the calculated by the satellites. ओके सर। ओके, जैसे आपने ओके बोला, मुझको एक मैसेज मिला कि सर हो गया, अब जाओ। इज दैट करेक्ट? सही पकड़े है ना? हाँ, एकदम सही पकड़े। नहीं सर, वो तो थैंक यू पे होता है। भूख लग रही है। सर मैं कह रहा थैंक यू हूँ से नहीं end सर, वो करते तो हैं ना। थैंक यू पे होता है वो तो। हाँ, एकदम होता है। Thank you, चलो, sir. Thank okay, you, sir. take थैंक care. यू सर। थैंक यू सर। Okay, bye bye. Let's meet again in the next class. Hello, bye bye. Signing off. Signing off.